To know more about it, to get more information, I would like to invite Head of South Asia, Managing Director for Flame India, that is Mr. Frederick Vidal. He's going to share with us today who we are, where we are from, what do we truly believe in, and why have we opened up this state-of-the-art service center. So let's welcome Mr. Frederick Vidal. Thank you. Very nice to be here. We don't do much now. Okay, so can everybody hear me? Yeah, clearly, very good. Welcome to our new service center and to also our head office in India and for South Asia, which is on the top floors of this building. I wanted to start by telling you what Oriflame is all about before I go into why we are here in Southex and why we have this latest technology service center for our consultants and people. So Oriflame is a direct selling company. We came to India in 1995 and we were actually the first direct selling company in India, and at that point in time we also co-founded the Indian Direct Selling Association. So we are now running 24 years in India, and we have tried and tested many things over the years. And in the last 5 to 7 years, we've come to a conclusion on what we are doing and how we are doing it, and what we will be doing in the future. So Oriflame is a company from Sweden, started 52 years ago, 1967, in Stockholm, Sweden, by two brothers. One of the brothers recently passed away, one of the co-founders, tragically. But they have created a company that now expands over 60 nations across the world. Asia as a region is the largest region for Oriflame, and of course seeing many interesting things going forward. So we started in a small country in Sweden, in Northern Europe, and today we are a global company with global turnover in excess of 10,500 crores. So that's us. We are a listed company on the Stockholm Stock Exchange, which means that I will not be able to share India-specific data or details or figures, but I will share everything that's printed in the annual reports, which are on the global level. So direct sales, I don't know how familiar you are with direct sales, but it's basically Oriflame sell cosmetics products. You can see some of them behind you. And we cater and focus primarily on mass market with high quality, affordable products. And we can do this through our distribution network of consultants. So we don't have retail outlets. We have 19 of these type of service centers across India. And then we have a lot of stock points in various parts, all the way from Arunachal Pradesh all the way down to Kenya and everything in between. So today we have a lot of consultants with us in Oriflame, and they sell our products to their friends and customers and colleagues at work and so forth and so on. So this is primarily a word of mouth type of business. Now, with the digitalization age, of course, Oriflame has also understood that we need to be offering digital platforms to ease the business needs for young people and people who are now used to working with computers and smartphones and so forth. So today we offer every type of platform available on digital aspects. So you can sit at home, do the business from your convenience of your sofa, with a cup of chai in your right hand and the left hand on the keyboard, and kind of do the business in that manner. Oriflame has, since our inception in 1967, always been focused on giving back to the societies where we operate. So we have always had a big portion of what we do being CSR, or corporate social responsibility. And today, with the last decade, we are now also adding a lot of sustainability focus. So in 2006,
we got together with a company called the Palya, a private school that has schools in various places in India, in North India primarily. And we have since then been together with the Palya for 13 years, and we have now graduated nearly 8,000 girl children. So through schooling entirely, through high school and graduation. And some of these I have met, and some of them are now, managers in large companies like Tata or Uber or McDonald's and various type of organizations. So this is something that we have done long before it was mandatory to give CSR funds for private corporations, and we will continue to do this with the Palya going forward. And we are a company that focuses on CSR. You have to have some type of focus. You cannot give a little bit here, a little bit there, a little bit here, and so forth. So we always have focused on children and women. And this is something that's very close to our heart. So these girl children, of course, they're all women or girls. And when they graduate, they become women. And already at that point, they are independent and empowered. So this is a very important part for Oriflame. Oriflame globally have donated more than 80 crores in the past 10 years for various CSR activities, primarily, of course, in the developing part of the world. And again, I want to stress that this is a vital part of what we are as an organization. Sustainability is something that's, of course, extremely important going forward. And this will also be important for customers who choose brands of preference. For the North region, it has been a major contributor for the company. And जब नॉर्थ की बात करते हैं, so दिल्ली of course एक बहुत ही integral part है हमारे कंपनी के लिए. एंड जब दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. जैसे कि बताया, ये वाला फ्लैगशिप ऑफिस बहुत एक्सेसिबल है. और इससे भी बढ़िया बात ये है दैट हमारे यहाँ पर दिल्ली में एक बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेंड आया है, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लेडीज़. ऑफ कोर्स दे आर चेंजिंग पीपल्स लाइव्स. एंड ये एक सिर्फ ब्यूटी ब्रांड ही नहीं, बट इन अ वे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बदल रहा है. द वे हमारे कुछ कंसल्टेंट्स ने इस बिज़नेस को प्रोजेक्ट किया है. वी हैव अ होल लॉट ऑफ लेडीज़ विमेन जो कोइंसिडेंटली शायद अपने प्रोफेशंस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस और व्हिचएवर रीजंस, वो हमारे बिजनेस में बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं. एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ की तरह वो इस बिज़नेस को लेकर जा रहे हैं. सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ वेयर वी आर टुडे. एंड इस ऑफिस की वजह से ऑल्सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट हम ये अपॉर्चुनिटी और भी लेडीज़ और भी मेन के पास में ले जा सकेंगे. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स. ट्रेनिंग किस तरह की रहती, मतलब लेडीज़ लोगों को जो उनके लिए जो सेलिंग करने के लिए ट्रेनिंग है या फिर अदर ट्रेनिंग? सो ये कॉम्बिनेशन रहता है. ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हम करते हैं जो सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि वेलनेस की तरफ भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज हमारे पास में ब्यूटी के अलावा वेलनेस का भी सेक्शन है. इसके अलावा हम ज़रूर उनको ट्रेन करते हैं ग्रूमिंग पर्पसेस के लिए एंड ऑल्सो किस तरह से वो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं बिकॉज हमारा बिजनेस कभी ये नहीं कहता दैट फैमिली को इग्नोर करें. वो हम सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है और उसको मैनेज करते हुए कैसे बिजनेस को मैनेज करना है ताकि आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकें. तो आजकल तो ये लोग व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर भी ज़्यादा पब्लिश कर रहे हैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे के और हमसे जुड़िए या फिर ये प्रोडक्ट है हम लोगों के या ये आज ऑफर आया हुआ है इस मंथ का. तो इस तरह से भी लेडीज़ लोग काफ़ी कर रही है. बिल्कुल सही. और आपने बिल्कुल सही पहचाना. डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया है एंड डिजिटल में भी कैसे आगे बढ़ना है उसकी भी ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं. हमारे पास में एक मैनेजर है जो स्पेशली डिजिटल पर फोकस करते हैं एंड डिजिटली लोगों के पास में पहुँचना. एंड फिर ऑफ कोर्स हमारा एक बिजनेस है ये जहाँ पर हम बैलेंस ज़रूर रखते हैं, डिजिटली भी मिलना एंड ऑफ कोर्स ऑफलाइन भी लोगों से मिलना. सो ये ट्रेनिंग सेंटर हमारे को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है दोनों ट्रेनिंग्स को बैलेंस करना. सो दैट्स हाउ इट इज. इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और अगले एक साल में कितना किया जाएगा?
It's a very good question. I wish I could answer that question, but I can't. I can only answer questions that are of global nature. No India-specific figures, unfortunately. And this is because, like I said before, we are listed on the Stockholm Stock Exchange, and people, investors, read newspapers, and then they can get specific insider information if I share. So I'm restricted. I'm sorry. और भी किसी के कुछ लेडीज़ लोगों के लिए तो आप सब कुछ तो ले आए, अब बाकी क्या रह गया आप लोगों के पास और फिल्म को लाने के लिए? सो मैंने शायद ज़्यादा लेडीज एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर ली। हमारे पास में बहुत सारे मेन नेटवर्क्स भी हैं जिन्होंने शायद अपने जॉब स्टार्ट करे बट दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, और उन्होंने वेलनेस रेंज को बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट किया। जस्ट एन एग्जांपल, अभी हमारे पास में एक बहुत ही फैंटास्टिक सक्सेस आया है ऑफ अ जेंटलमैन फ्रॉम पंजाब। उन्होंने अपना कॉल सेंटर का जॉब छोड़ा और जितना कॉल सेंटर में उनको इनकम मिल रही थी उससे कहीं 3 गुना ज़्यादा वो ओरिफ्लेम में अर्न कर रहे हैं। सो वेलनेस वो बहुत अच्छे से प्रमोट कर पा रहे हैं। सिंस एक सेक्शन ऑफ मेन शायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट वेलनेस की रेंज बहुत अच्छे से प्रमोट कर पा रहे हैं। सो दैट्स वेरी We have many of those examples. You just mentioned one. डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो ओरिफ्लेम का एक्चुअली बहुत नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया के अंदर है वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी लोगों के दिमाग में आता है चीज़ इस तरह की चीज़ करना, तो उसको आप लोग कैसे कर रहे हैं? लास्ट 5 ईयर में आपने कितना ग्रोथ किया? सो अगर आप बात करें तो यस, कुछ जगह कुछ सिचुएशंस आती हैं लोगों की जहाँ पर लोग शायद कहीं पे कोई चीटिंग खाया है या किसी ने गलत एक्सपीरियंस शेयर किया है। हम अपने ब्रांड को और द फैक्ट दैट हम लोग एक स्वीडिश कंपनी है जो स्वीडन एक्चुअली जाना जाता है एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होने का, और अभी 2017 में अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट चेक करेंगे तो मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी का अवार्ड मिला है। सो हमारा ये मोटिव रहता है और हमारा ये कल्चर है कि हम किसी और कंपनी को नीचे ना गिरा के हम सिर्फ अपना जो हमारी क्वालिटीज़ है, हमारा रेनोवेशन प्लान है, उसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एंड ट्रस्ट गेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। And I think it's important also to add on here that before the direct selling guidelines, there were no guidelines, there were no legislation, which for an industry is peculiar. I mean, all industries, telecom, electrical, all have guidelines or legislations of some sort. So when we started the India Direct Selling Association, it was a self-governing body to make sure that the serious companies are protected and that the consumers are protected in the long run. And now the DS guidelines are here and we are super happy about them because that will protect us as a serious company and the other serious companies, but also in the long run the consumers, of course, which is perhaps the most important. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Get a picture somewhere. Yes, sure. Yeah.